पर आपने कुछ ज्यादा काम कर दिया, ये दिक्कत आई है ज्यादा काम कर दी। कि परफॉर्मेंस वाइज कोड आपका सही नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, नीचे जाइए जहाँ आपने बटन रेंडर करा रखे हैं। बट ओनली द इनपुट इज दिस वन ना, लाइक 2 3 नहीं 4 नहीं, 5 आई एम 6। नॉट सजेस्टिंग एनी सॉल्यूशन, आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन, ठीक है? सो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत भी हो। डू यू थिंक दिस इज अ गुड अप्रोच, taking performance into consideration? You have total 2.5 years experience as a front end developer only, यस, is it? एज अ फ्रंट एंड डेवलपर समटाइम्स आई आल्सो वर्क ऑन बैक एंड। सो हाँ, अगर आपको अप्लाई करना है ना इस मॉक इंटरव्यू के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। वहाँ पे मैं फॉर्म डालता रहता हूँ, मतलब बेसिकली हमारे 1-on-1 मेंटरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके भी मैं फॉर्म वहीं पे डालूंगा। और जो हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है उसके फॉर्म भी मैं वहीं पे डालता हूँ। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप चैनल। ओके। Okay, so we have Harsh today, and let's start with your introduction, Harsh. Hello, so my name is Harsh Soni. I am from Indore, Madhya Pradesh, and I am basically a ReactJS developer, and I am working in a startup. So I have been working since 2.5 years. You have total Yeah. 2.5 years experience as a front-end developer only, is Yes. it? As a front-end developer, sometimes I also work on backend, like Node.js. Okay, and what are your Yeah. expectations from this mock interview? So like it's been too much time since I have given interview to someone. So with this interview, I will be also able to like test my skills, like at what position I am at, and yeah, that's it. Like how much I know. Okay, okay. Yeah. I have prepared a very good question for you, very good Okay. application-based question. Solution might be Okay. simple, but the Mm-hmm. way of approaching the solution can take some time. Okay, I've shared a link with you. Just go to chat, open the link. So Okay. you know, Diwali is coming, right? Mm-hmm. And we'll be hanging lights outside our home. So this is that only. This problem is that only. You have to build a application in which there can be n number of lights, and No. you can basically set how the light will react. Basic by react I mean how will it blink, or will it blink? Will it click on Mm-hmm. that select box? Click on that select box. The Select box. ahead of Okay. pattern. Huh? Will it blink? Will it fade? Or will it be static always? Okay. We have Mm-hmm. interval also for the blinking and fading. We will be using interval. For example, Okay. if it says 1, then it will be blinking after 1 second. So if it says 1, then it means it will be blinking for 1 second, then again it will be blinking. And if it says 1 second for fading, then it will blink after 1 second. No, sorry, it will fade after 1 second and then come up. You can try it out, okay? Just choose Mm-hmm. fading for the first one, 1 second. Second is blinking, you Mm-hmm. can see blinking. Blinking for two Now you seconds. can Okay. now you can start show. Now, okay, I think you have to extend this view. Okay. Should I open up it on me? Mm-hmm. This yellow portion, this is light only. So you can see first one is fading for 1 second, then again coming to its original form. And for the second light, you can see it's blinking after 2 seconds. Now you can It's change it to blinking after two static. seconds. Yeah, you can change it to static. Now it will remain as it is. Okay. So for static, we are not using any kind of interval. Like it's just a field there. Yeah, obviously, because it's static, Mhm. na, it will always be Okay. visible. Okay. Have you got the functionality? Do you have any question? Yeah. So basically, what is the expectation? Like what I have to do You eventually? have to build this. You have to clone this basically. I have to clone this. Okay. This is the demo. You have to build this. Go. Okay. You can open your Visual Studio Code and start writing the code once you are done with the clarifications. So I have to like there will be n number of fields as you were saying, right? N number of Exactly. lights. Okay. So there should be some input where I have to provide the number of lights. There is no input, but that input would be available in your code only. Okay, that output is available. So right now that input is hard coded as two. Yeah.
but it can be Okay. 3, it can be 4, it can be 5. So make sure you write code in that way only. Okay. So let me take the screenshot of this because like if I remove this, then I might need UI. Okay. So The UI, I would say you can take a screenshot, but uh still focus more on functionality than UI. okay. Device less management system. Okay. That's a great. Yeah, so I have to go to You source. can use Visual Studio Code only. Uh, Here I Visual can Studio work. Code. Acha, Like in you this. have experience with Code Sandbox, is it? Then you have to Yeah, yeah, yeah. create a you have to create a new project then, I have because to create new function. I have written Okay. working code here, so I don't want you to look at that. You can open a new code Okay. sandbox. So inside this app.txt file, I have to render the components. Okay. So I will remove the default boilerplate, which is provided. The system. Okay. Now we can have lights, light count. Okay. I will create a variable using the use state, which will store the number of lights count. Or as you said, that we can hard code it as also Hmm. count. So for now, I'm giving it as two. Okay. I can remove these unused imports. Okay, so for every light, we have to render that component, which makes it blinks, which makes it static, or which makes it fade. Okay, Yeah. so from this, what I can do, I will create a array from light count, fill, and dot net. Okay, so it will get rendered like whatever we return from here, na, it will get returned two times. So Hmm. I can create a new component which will be a light or whatever we want to call it. Okay. Yeah. Now this light component I can create in a new file. Light tsx. It does not count. React from React. It's font light and spawn. Okay. So these I have Hmm. to import here in this application. So it will get rendered two times. And here I have to wrap this with a div such that they will come one below one. So I have to give text column in this case. This one flex and flex direction will be column. I would say focus on code quality also. Okay. 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 Mhm. Okay, so here what I can do now, lights and this can will this work or not? It will not have to use the- Okay, now for every light, I have to create a component. So uh, I can use class names as well here.
Last name will be light. And in light, what we want? We want a rectangular box which shows the light, which emits the light pattern, Yeah. which is a select drop down, and we have interval, which is the text field. Hmm. Okay, so this will become the card, and we have the uh, rectangular box. Light container I can give here, and it will be name will be light, which will be a rectangular box. Okay, Mm-hmm. another thing we have pattern, right? So select we can give here, which will be a pattern. So select like I am used to use the MUI components, but here how it comes. Select के अंदर you can use option and then select where you can use on change. On change. Okay, okay. So it returns the event or target, but हाँ, values the it returns the okay. value as far as I know. हाँ, it returns the value. Let values. Yeah, like this I guess it returns option. Okay. So in option we have three options: padding, and we have what is this? Blinking. Now another option is blinking, Blinking and static. static. Okay. And option where we have to also provide the value, I guess. Value. Or else what I can do instead of providing options this way, I can have create a options here. Options in the array. Filled or like these also options in an array. Each object will represent an option. Label will be padding. Value will be padding like this. And then I can render these options inside that select. Okay, so linking with capital B, padding, linking and static. Okay, so for every option, I will do option map. Options dot map. For every option, I will return the option for select. This I will, this I can give. Okay, here you will have option dot value, and inside here you will have option dot label. Okay, so Mm-hmm. this is the select with select will be a pattern. So we have to give the label as pattern. So what I can give, I can type this with a div, and then label comes like this. Okay, pattern. Okay, pattern is fine. Why did you use label instead of div? Uh, yeah, we can also use div. Then why did you use Actually, label? naturally, I'm used to use MI components, so that's why I'm not like I forgot like what we used to use in vanilla HTML JavaScript. Yeah, I can use Oh. div as well if you want. Uh, Uh, Actually, label makes more sense here. I just wanted to know why do we use label Actually, like for the label comes like if we have any kind of inputs from the user. So for a good readability purpose, we use labels. not just We can also readability, use. accessibility also. For example, you can just click the label and it will Mhm. automatically focuses on the input element. So that's why we have Yeah. four attribute inside a label also. So uh that's the main functionality of this label to provide accessibility. Mhm.
and it's a Yeah, like semantic, obviously. for screen readers, you mean, na? Like it reads out as well, whatever we have written. Not just for the screen readers. It's an add-on for the screen readers also, but also for the Mhm. users. For example, if you click on pattern, it will focus on fading. In case you use four attribute inside label. Okay, that's For also attribute. additional functionality. So you don't have to Okay. click on the, for example, if you are rendering radio buttons, you don't have to just click on the radio button. You can also click its label, then it will be get selected automatically. Mhm. Okay. All right. Okay. So the first field will be pattern, and the second will be interval. Okay. So I can come here interval in seconds. Now interval in seconds, and we will have not select input here. We will have text field input type number. अच्छा, do one thing इसमें इसमें एक आईडी दे Mhm. दो टाइप नंबर में आईडी आईडी इज इक्वल टू इंटरवल ID is equals to interval. you have to provide an id Okay. to In label input input. Okay. 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 Can I know why we are doing this? Providing IDs हाँ अब लेबल में ऐड फोर एट्रीब्यूट for attribute. Okay. For फोर इज इक्वल टू इंटरवल okay. सो अब आपको पता चलेगा जस्ट सेव इट हाँ अब Mhm. इंटरवल इन सेकंड्स पे क्लिक करना Okay. फॉर दिस Okay. So it is okay, क्योंकि but दोनों की सेम it आईडी है ना provide. Uh, so if इसलिए we वो even उसमें click on this label, then it will focus the first element with the ID interface. Yeah, a unique ID, it will focus on the first one, and with the second label, with Mhm. the unique ID, it will focus on the second. Mhm. So for that, now what we can do, we can pass indexes here. So index here we can pass light Why index. index? So basically, if I create indexes prop here, then I can pass have different like unique IDs here. Correct, na? Let's say in future, uh, Mm-hmm. we implement a functionality for the delete. We have For the delete five array elements, and I delete elements, the third element. you should delete the third element. Ideally, what should be the ID of the fourth element? ID of the fourth element, like whatever, like if whatever we want, but ideally it It should will be get fourth. changed, right? Ah, Do you think this is a good approach, taking performance into consideration? Taking reconciliation into consideration. Do you know about React reconciliation? no, I am not aware of the data reconciliation. Okay, okay, okay. But what we can do now, we can pass a callback as prompt to each one of the light component. And there Th- inside the light component, we can call that function to delete that. So basically, in the app That's component, okay, we that's okay. will That's the implementation part, but I'm more concerned about the performance actually. Mhm. That's why I said index can be changed anytime, and that's a index. drawback for the performance. Mhm. Okay. So if we don't want to use index, then we can also use IDs. But Okay. right now the lights count is two. So how we can add IDs? So we can have IDs like this, but only the input is this one, na? Like two, three, नहीं four, नहीं five. आई एम Then नॉट सजेस्टिंग एनी सॉल्यूशन आई एम जस्ट mhm. आस्किंग यू क्वेश्चन ठीक है सो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत भी हो ठीक है हाँ मेरा सिर्फ क्वेश्चन था कि ये परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करेगा अब आपको नहीं करना है तो यू कैन कंटिन्यू दिस कोड ओनली वी विल कम बैक टू दिस लेटर ओके अगर आपको अभी दिमाग में इसकी अप्रोच आ रही है यू कैन कंटिन्यू विद दिस अप्रोच right now we can just write the code and हाँ हाँ after writing the code we can try optimizing it. Okay? ओके But anyways, we need key here because we are using method. So the key we can pass indexes of.
Okay, now this is okay. For now, I can also pass. For now, I can read. So, okay, I can pass indexes. Let's use the for level. So what I can do, I can use index, interface, I props. I can expect indexes now. Okay, this will return React code instructed to me. I props. And here I will expect index here. And for this thing, and this will become the ID. Interval. If I click here, it will focus the corresponding. If I click here, it will focus the corresponding input. Okay, this is okay. No? Okay, we have 30 minutes left. Okay. Oh, sorry, not 30 minutes. We started a bit late. Okay, 20 minutes. Okay. So now I have to start applying the CSS. So I will Hmm. go to app.css file. Ah, What you can just apply classes we from will return to app.css only. light container. So light container will be, I can write here, light hyphen container. It will be display, flex, and flex direction. So gap I can give 10 px for now. Okay, this is the light container. App.css but is not getting applied. Okay, it is getting applied now. Okay, this is coming fine. For light container, we have light. Okay, so for light, which will be a rectangle. So I can give height of 50 px for now, width of 70 px for now, and border 1 px solid red. Okay, it is coming. Seems to be coming fine. Okay, for input, so I can give last name input. So I can come here, push display, let's direction with and in the light container I have to ln items center. Okay, so I can do. Okay, this is okay for now. We are providing here as well for every light container. Okay, light may we okay. We can give border here as well. Border 1 px solid black or white button. Padding 5 px and here we come in the app.css file. You can also give style. Gap will be 10 pixel. Okay, we can use the padding to 10.
Now we have to apply Looks the functionality. exactly same, kind of. Uh-huh. Now we have to apply the functionality here. So we have to add the button as well, right? At the bottom. Pause show and we have the start show. Okay. So what I can do, I can come here. At the bottom we have button, last name. Mm, action button. We can put the last name is action button. Start show. That is correct. I guess why it is coming. Okay, so it is taking the already written styles for the button. So start show we have pause show and stop show. Okay, pause and stop. Okay, so when the show is started, then we have to hide this button. And if the show is running, then we have to hide this button and show these buttons. And if the show is stopped, means not started yet. Mhm. Okay, so we have to add server is show show started self show start is show started, which would be a boolean, and by default it will be false. Okay, and we can render this condition. Can render this button based on this condition. If the show is started, okay, if the show Mhm. started, then what I can do now? How I can. So if the show is started, then we will render these buttons. And if the show is not started, okay, now if I click on this button, on click, uh, click, so start. I will pass here. Mhm. So what I'm going to do, going to create a callback, which will get called on the click of all these three buttons, but I will pass different values. Okay, yeah, makes sense. Pause and stop. Pause and I'll click. Action will be a string, or it can be a enum. Start, uh, pause, and stop. Okay, if the action but start, the action is start, then set is show started to true. Okay, okay, but Mhm. we have three status, we have three buttons. So what we can do now? Status current. We can change to this current status. Current U double R E, and the current status set use here, and it will be in our this. So what I can do, I can export type T action or status will be enum. Okay, I can give it to here,
and initially it is uh, stop. But this also we have to maintain, and that also we have to maintain. Hmm. Don't you think the code We have is getting a bit messy now? so basically we have three buttons. Mm-hmm. If we click on start now, so initially this will be visible. Mm-hmm. Okay, and these both buttons will not be visible to the user. Okay, when this will be visible if the show is not started, and if we click Mm-hmm. on this button, then we are making the show to start. Okay, so Okay. we have to add these buttons and we have to uh, make these buttons visible to the user. So for this thing, we Okay. have to maintain a state. Okay, Mm-hmm. but I guess this is not required. Current status, this is not required, I guess. Why? Mm, because what we can do now for handle click. So if we click on stop, then we will do is show started to false. Correct. Let's say But I click on pause. if you click on pause, then we will not change the this variable, which we defined earlier. Okay, if you click on pause, then we will stop the functionality which we are going to. So basically, we are going to use interval, right? So we can clear the interval. So in the future, we are going to create the interval, right? To turn But on what and about off the the lights. but what about the text? You will still show pause show instead of resuming. Is instead of resuming. Mhm. Okay, so do we also have the text here? If I click on pause, then we It do have will a resume it button, will right? say resume. Yeah, yeah. It will say Okay, it resume. will say resume show. If I click Do on you think we pause. should show resume? Yeah, if you click on pause, then yeah, definitely we should show resume. Na? Yeah. That will be okay. Let's do this thing. So what we can do? Let me. This is definitely required. Okay, and if I click on start, if I click on start, then I have to start the. Okay, if else if or what I can do now, I can remove this. Set show started. I can directly call here for now. True, true. Okay, and if I stop, if I click on stop button, then I have to stop. Okay, for now, let it be. I click on start, stop. Okay, this is to working. Now, if the state changes, it shows started. Okay, the show started. And what I can do, I can. Okay, but these patterns we have to also export, na? Yeah. Mm, so value we have to import from there. Okay, so like mm, so for every light, whatever the status is, we have to maintain it also in this app.tsx file. Yeah. Okay. And that's the main functionality. Mhm. So I lights. can give you a hint. Do you want hint Huh? for the CSS Yeah, part? sure. Yeah, CSS file I definitely like have to Google it. I mean it So translate. you can use opacity Opacity. Okay. I was thinking to use transition, with but I'm opacity. not sure with opacity. Okay.
Okay, let's do this first, then we will come to the CSS. Okay. Mhm. All right. So how it will? So we have lights count like this. So we have to create this dynamic for every light. We have to. Okay, so we can store this in array format. So array will be what I can do type of t. So light key ID. Where do I want that? ID will be this. I don't want. I want pattern, and I want interval, which is optional, which will be a number. Okay, and this will become light status array. Okay, light status, set light status. So for every light, we are going to use index. Okay, so light status I have to pass. Okay, do I need to pass light status? That is required. Light status, not light status, and index of light status. Okay, and set light status will be change pattern will be string, and we will expect another argument as interval, which will be a number. Okay, and this will change the status of the light. So set light status, index. Okay, wait. So we can pull it out of this thing. पता है टाइम कितना बचा है? Okay, time is remaining 15, 14 minutes is only. 4 minutes, sorry. No, we started on 3 o'clock, no? It is 3:46. 1 hour नहीं होता है ना, usually you will get 45 minutes, but I gave you हाँ 50 minutes क्योंकि okay, okay. I was हम not लेट aware. स्टार्ट किए थे. Yeah. Okay, let's do functionality, then let's see what happens. Yeah. Okay, like how much I can code. Mhm. Let's do it till So, 3:55 then. okay, okay. So, every, so this is okay for now. Okay, pattern interval. What I can do, I can come here. Is I'm expecting here. Okay, light status of index. So this is the light status. Let export this here. We have to come here. Uh, the light status. Okay, light status. Change light status. Hmm. So basically, whatever we change here, we need to store it. So we have to call this function. And for select Okay. value, we will have light status dot pattern, whatever we have. On change, what we will do, we will have change light status. Okay, this will take two numbers now.
pattern or interval. Hmm. So like status pattern, we will have index event dot target dot value, and interval will be the previous interval itself. So like first dot interval. Okay, this is okay. And one change play this we will also call here. Okay, dot pattern. Okay, dot target dot value. Why it is not loading? Is there any errors? Let's check in console. Like this 625 में cannot read properties of pattern. अच्छा, ओके। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कोर्स वन बुक्स में लिंक है, ये इनका हम्म, लोकल एनवायरनमेंट का है, बेसिकली इनके सर्वर पे ही चलेगा, हम्म। बट ये यूनिवर्सली नहीं, यहाँ चलता पे है। भी चल। हाँ, हम्म। okay, so this is okay for now. It will change. It should change. Let's just be able to call here because this is empty. Set like okay. Index भी पास करना पड़ेगा. So pattern interval यहाँ पे मैंने पास करा. Index ले लेता हूँ पहले, which will be a number. Okay. Index भी अपने पास ऐसे पीछे pattern and interval. Okay, यहाँ पे index मैंने ले लिया. नंबर यहाँ पे ऊपर में set lights status में previous. Usually I use load dash. So I use load dash. Load dash में थोड़ा सा easy हो जाता है. व्हाट इज लोडेश? Hmm. Load dash is basically a utils library where we can transform object array whatever we have na easily like with the provided functions from the library. ओके। So मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको clone करूँगा. Date like status load dash import करना पड़ेगा. Star as score from load dash. समय कम बचा है. ओके, clone date. आपको क्लोन करना ही क्यों है? ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको ट्राई करता हूँ. टेस्ट तो इंस्टॉल हो गया बट वो पता नहीं. सो मैं क्या करता हूँ कि प्रीव्यू में प्रीव्यू डॉट मैप करता हूँ. ठीक है, राइट. सो राइट स्टेटस और इंडेक्स. ठीक है, इफ इंडेक्स और I matches the index, then we will update the preview. Otherwise, we will return. I'll return the folder one as well. Okay, so preview has this thing. So preview.pattern. Okay, so return like this. We can pattern will be pattern will be like this. What is happening? ये डबल डॉट है, यू हैव टू यूज Okay, ट्रिपल। sorry. Light status. So this should work. What we can do, we can use it. Do use effect and check quickly.
status. To come here. Checking code. Blinking में करा. Okay, 27 पे we are getting some error. Cannot read properties of undefined. 27 में current टर्मिनल नहीं है. Okay. पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो क्या ठीक है। आई थिंक Let's- लेट्स जंप टू वर्डिक्ट, क्योंकि फिर आपको सीएसएस पे लिखनी होगी और वो अभी नहीं हो पाएगा यार इतनी जल्दी तो। Yeah, it will एटलीस्ट take. 10 मिनट्स तो और लगेगी। ओके, यू हाँ. कन वो गूगल मीट पे नहीं नहीं कोड पे रहिए, कोड पे रहिए, ठीक है। सबसे हम्म, पहला जो मेरा आता है आपका लिए फीडबैक, वो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि परफॉर्मेंस वाइज कोड आपका सही नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, नीचे जाइए जहाँ आपने बटन्स रेंडर करा रखे हैं। हाँ, हाँ. इसके अंदर जनरली क्या हो सकता था, जब भी देखिए रिएक्ट क्या करता है, बहुत स्मार्टली डोम मैनिपुलेशंस करता है, आपको भी पता होगा, वर्चुअल डोम की मदद से। इस केस में क्या होगा, आपने स्टार्ट शो यूज किया है या आपने पोस्ट शो यूज किया है, दोनों को कंडीशनली रेंडर करा रहे हो। इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, बटन को ले सकते थे, उसका जो अंदर का टेक्स्ट है ना, उसको कंडीशनली चेंज कर सकते थे। समझ रहे हो? और वो उसको हाँ. कंडीशनली चेंज करके आप ये लिख सकते थे स्टार्ट और पॉज, और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऊपर स्टेट है कि क्या वो पॉज है क्या वो स्टार्ट है, तो आप वहां पे अपना लॉजिक लिख सकते थे जो भी आपको आगे की स्टेट अपडेट करनी है। इससे क्या होता, वो दोबारा डोम को अपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसका टेक्स्ट चेंज करता, और वो काफी लाइट रहता है अपनी इस पे ब्राउजर पे, वो काफी आसानी से उसको डोम मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, जब हम But one डोम question एलिमेंट here. को पूरे को, सॉरी वर्ड बताइए। So anyways we have to go. We are going to render two buttons ना. So वहाँ पे तो ये condition चाहिए रहती है ना. मतलब जैसे एग्जांपल इफ आई स्टार्ट द शो राइट. सो यहाँ पे तो दो बटन्स रेंडर करने हैं. हाँ, सो जैसे लास्ट वाला कंडीशनली आ गया, बट मैं फर्स्ट वाले हम्म, की कह रहा हूँ। ये तो हाँ. देखिए, ओके. ये वाली जो यहाँ पे हमारा हमें हमें दिख रहा है, इस केस में ये मायने भी नहीं रखता है कि हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दो बटन हमने रेंडर करा दिए, इतना कुछ परफॉर्मेंस पे इशू नहीं पड़ेगा। बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, वहां पे छोटा छोटा मिलके बहुत बड़ा हो जाता है, फिर मिली सेकेंड्स में भी फर्क आएगा, 900 मिली सेकेंड्स, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा, जब इस छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आगे परफॉर्मेंस सही रहती है हमारी ओवरऑल ऐप की। ओके। हाँ। ओके. ओके, और हाँ, सबसे मेन पॉइंट जो मेरे को लगा आप क्यों नहीं कर पाए इसको, एक डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट होती है, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमें यूआई पे दिखेगा वो डेटा की मदद से दिखेगा। डेटा बेसिकली क्या हो गया, हमारा कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, उसके अंदर सारा डेटा आ गया। एक बार कोड सैंडबॉक्स खोलिए। मेरी कोर्स एक्सपेक्टेशन क्या एंड. थी आपसे, सेकंड वाला जो, ओके, ये वाला. यही है क्या वो? हम्म, हाँ यही है। ऐप आपका डॉट टी वाला एस है. एक्स पे जाइए, ऐप डॉट टी एस एक्स, यहाँ पे नीचे जाइए, नीचे लाइन नंबर ये देखिए आप, 38। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई आईडी 1 है, पैटर्न ब्लिंकिंग है, और इज इंटरवल 1 है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर ली। अब इस डेटा में मैं कुछ भी चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे को इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट बोलते हैं। आपको हमेशा ऐसा ही करना है। मैंने आपको इसलिए पहले ही बोला था कि मैं 4 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, आपने काउंट यूज किया, बहुत ही बेकार अप्रोच थी वो। ठीक है, उसको आपको इंप्रूव करना होगा। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, रीयूज करना है आपको हर चीजों को, तो पहले वाले को देखिए, पहली रो है हमारी, उसमें कौन कौन सा डेटा है। हमारी पहली रो में क्या क्या डेटा है, हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास पैटर्न है कि उसका पैटर्न क्या है, बस इतना सिंपल। और आईडी हम इसलिए यूज कर लेते हैं कि आगे जाके कभी भी अगर हमें इंडेक्स से, मतलब यूनिक आइडेंटिफायर से मैप कराना हो, तो आईडी यूज कर लो। ओके, इंडेक्स जनरली हर केस में दिक्कत नहीं देता है, आपकी बात सही थी, यहाँ पे हम यूज कर सकते थे। बट एज अ गुड अप्रोच हम ये करते हैं कि हमेशा एक आईडी लेके चलते हैं। हमें नहीं पता है आगे जाके कोई नया डेवलपर आके नई फंक्शनैलिटी ला दे, उसके अंदर डिलीट बटन ला दे, क्या ला दे। इस अप्रोच के लिए सही था, बट फिर वही बात आती है, अगर हम शुरू से ही एक अच्छी अप्रोच लेके चलेंगे तो ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट में वो दिक्कत नहीं देता है। ओके।
हाँ, सो ये अप्रोच मैंने सोची थी कि आप ऐसे करोगे। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ डेटा चेंज करना है, सब कुछ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है? आप हम्म, कितने भी आप मतलब इंटरवल को आपको चेंज करना है, इस डेटा में आके चेंज कर दो। आपको पैटर्न चेंज करना है, इस डेटा में आके चेंज कर दो। सब कुछ रीरेंडर हो जाएगा, फिर वहां पे चलने लगेगा, दिख जाएगा। सिंपल था देखो, है ना? सो हमेशा जब भी ऐसे स्टार्ट करते हो प्रॉब्लम को सोल्व करना, सो स्टेप बाय स्टेप करिए कि हमारी ये एक एंटिटी है, इसको रीयूज करना है, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट करिए। ओके। ओके। परफॉर्मेंस इश्यूज मैंने बोल दिया। वापस जाइए एक बार अपने कोड पे, और कुछ भी देख लेते हैं, क्या बचा है क्या? हाँ, ओके। ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप ब्रूट फोर्स अप्रोच कर रहे थे, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको कोडिंग में भी थोड़ा करना होगा इम्प्रूव। आपके जो रिव्यूज होते हैं पीआर, क्या वो अच्छी तरीके से किए जाते हैं? मतलब पूरा लिख के कि उस पे आपने पीआर रेस करी, बहुत सारे कमेंट आए, आपने उसको हम्म। रिजोल्व किया, फिर बहुत सारे कमेंट आए, आपने उसको रिजोल्व किया, क्या ऐसा रहता है? हाँ, यूजुअली तो कमेंट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डू लाइक करेक्ट वर्क ऑन, ओके so ओके, like they ठीक do है। review it, they do review the PRs, but yeah, like I don't often हाँ, get मुझे जो लगा, comments on. मतलब आपकी माइंडसेट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका ज्यादा फोकस था काम को कंप्लीट करने के लिए, कि काम कंप्लीट हो जाए बस। ठीक है? हम्म, अच्छे तरीके से हो, बुरे से हो, वो मेरे को नहीं पता, बस कंप्लीट हो जाए। और आपको एक और बात याद होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था यूआई पे फोकस मत करना, फंक्शनैलिटी पे हम्म, फोकस करना। राइट? बट आपने क्या किया? yeah, आपको पता है, आपने बट पहले यूआई यूआई तो पे ये, फोकस किया। हाँ हाँ, बिना यूआई राइट? देखे अपन कैसे कर सकते हैं ना, कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं हो टेस्ट। सकता था आप ये हाँ ऊपर का जो रेक्टेंगल है ये ना देते, वो तो आपको देना पड़ता, हम्म, देखो लाइट वाला, उसमें तो हाँ सीएसएस हाँ, लगानी है। या हो सकता था करेक्ट। इनपुट को आप वही छोटा रहने देते, तो बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है? हाँ, बट इट टूक टाइम यार। हाँ, इट टुक टाइम। सो सो मैं वो टाइम फंक्शनैलिटी सेव करिए करके पहले। इधर कर। हाँ, फंक्शनैलिटी करके आप कितना ही यूआई करिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। अगर इंटरव्यू बोलता है तो करिए, वरना मत करिए। ओके? ओके। परफेक्ट। आप अपने बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपको क्या लगा अपनी परफॉर्मेंस से? परफॉर्मेंस तो लाइक स्लो थी, लाइक मुझे जैसा आपने स्लो बोला नहीं थी, कि बट आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे। स्लो नहीं थी हाँ, बिल्कुल मैं भी। एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था। हाँ। मतलब थोड़ा समय तो चाहिए कि सीएसएस में आई एम वीक, मतलब मैं हम्म। ये मानता हूँ कि मैं सीएसएस में वीक हूँ। सो जो ट्रांजिशन वाला जो था ना, अगर ट्रांजिशन ओपेसिटी वाला, तो उसमें डेफिनेटली गूगल मुझे करना पड़ता। बाकी वो फ्रॉम कोई जावास्क्रिप्ट इशू नहीं पॉइंट है, ऑफ व्यू। सीएसएस में सब ऐसे ही रहते हैं। मेरा इस हम्म, क्वेश्चन से मेन मोटिव भी यही था कि मैं आपकी फंक्शनैलिटी देखूं इंस्टेड ऑफ सीएसएस। सीएसएस में मैं हम्म, आपकी मदद कर ही देता कि ओपेसिटी लगानी है, और अगर फेड हम्म, करना है तो उसमें हम इजी इन आउट लगा देंगे। अगर फेड नहीं करना है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है? और ट्रांजिशन की मदद से हम सेट कर देंगे कितने सेकंड के लिए हमें उसे दिखाना है। ओके। हाँ, एक और बात आती है ओके। देखो, हाँ हाँ आपने टाइप्स भी लिखे इसके। हाँ। ठीक है, पर अगर आप फंक्शनैलिटी पूरी कर देते तो ये ज्यादा मैटर करता मेरे लिए। बट आप क्योंकि फंक्शनैलिटी पूरी नहीं कर पाए, तो ये मैटर नहीं करता है। ओके। हम्म। बाकी आपने स्टेट वगैरह सही यूज करी है, इतनी कुछ ज्यादा फालतू स्टेट भी यूज नहीं करी थी। हाँ, थोड़ा नीचे जाइए। ये तो चेक और करने के लिए था यूज और करके। नीचे जाइए। देख रहा हूँ और कुछ भी हो सकता है क्या। एक सेकंड रुकिए, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। इस केस के लिए तो इतना चलता है। ठीक है। ओके। सो यही था, जो 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 मैंने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस मुझे क्वेश्चन तो नहीं है। समय ज्यादा लग गया, मतलब समय जल्दी निकल गया समय मुझे। ज्यादा नहीं जैसे लगाया, आपने आप बोला कोड कि बिल्कुल फास्ट कर रहे थे, सही कर रहे हाँ थे। हाँ हाँ, पर आपने कुछ ओके ज्यादा ओके, काम कर दिया, ये दिक्कत आई है। ज्यादा काम कर दी। वो डेटा से मुझे चालू करना था, फिर उसको रेंडर करना था, जैसे आपका जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तब आपकी अप्रोच बिल्कुल सही जाती है।